Hi everybody. In this video guys, I will discuss about the difference between CIRA and PSBD, and the new name is PS code. Most of the candidates guys, when they are in their countries, or even when they are reaching in UAE, still they have many doubts, many questions in their mind that what is the difference between CIRA and PSBD. So before going to the difference, first I will tell you the sequence of my video. Of course, I will start with English, definitely, but at the end, I will translate, I will summarize in Urdu also. It will be for Hindi and Urdu candidates. So guys, you must know that in UAE is United Arab Emirates. They have 7 emirates. I will count: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah and Fujairah. Now you need to understand that PSBD or PS code is a one department, is regulating security industry in all 6 states except Dubai. I'm making it very clear, except Dubai. Dubai I will discuss later. Training for PSBD or PS code is NSI. It is under Ministry of Interior. What is NSI? It is National Security Institute. It's a basic training for 5 days, but it is basic security guard training. The final exam guys, it is under PSBD, or you can say PS code, under the supervision of Abu Dhabi Police. In this exam guys, they will ask basic questions about security, but these questions will be related to the course which you will study for 5 days. Easy exam, not difficult. Along with physical fitness test also. The second test will be physical fitness test, that I will elaborate later in other video. Now guys, about PSBD, you are clear that training is NSI, exam under the supervision of Abu Dhabi Police, and then physical fitness test. Make sure if anyone is failed or anyone is without license of PSBD or PS code, will not be allowed to deploy on duty. So it was all about PSBD. Move on to CIRA. What is CIRA? SIRA, Security Industry Regulatory Agency. It is regulating security industry guys, private security industry I mean, in Dubai only. The training for CIRA is also 5 days training, but in these 5 days they are covering 4 areas: BSD, Basic Security Guard Training; BLS, Basic Life Support, First Aid; POD, People of Determination, how to deal with them; and then Basic Firefighting. It is also 5 days training, as I said. The final exam is being conducted in SCTC, Security Cadre Training Center. Both tests, written and physical, is being conducted there. Now guys, in Dubai, the guards without passing CIRA can be deployed on duty, but if their company got the temporary license from CIRA. This is the difference between PSBD and CIRA. PSBD, no one can be deployed on duty without license. But in CIRA, they have temporary license for 3 months. If somebody is coming here, company can get the temporary license and they can start the job. But within 3 months, company will send for the further training. So this was all about guys, the difference between PSBD and CIRA. I given you clear and short details. Hope you understood. Let me go back in Urdu now guys, for the other students, as I promised with you. यूनाइटेड अरब एमिरेट में आने वाले जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनको समझाने के लिए कि फ़र्क क्या है सीरा और PSBD का. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं, इसमें 7 स्टेट्स हैं. स्टार्टिंग अबू धाबी है, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वेन, रास अल खैमा एंड फुजैरा. गाइस, आपकी इतला के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए,
PSBD or PS code, they are regulating, running the security industry. 6 स्टेट्स में वो रन कर रहे हैं, लेकिन दुबई में नहीं. दुबई के बारे में मैं बाद में बताऊंगा. ट्रेनिंग का नाम क्या है? NSI, नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट. 5 दिन की ट्रेनिंग है और एग्जाम होता है PSBD के अंडर द सुपरविजन ऑफ अबू धाबी पुलिस. इट्स अ कंप्यूटराइज्ड टेस्ट. एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टॉपिक पे जो पहले आपको पढ़ाया जाता है. उसके साथ होता है जो दूसरा टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट. वो अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल दूंगा. गाइस, याद रहे कि PSBD के लाइसेंस के बगैर कोई भी गार्ड ड्यूटी पे डिप्लॉय नहीं होगा. अब आइए सीरा की तरफ. सीरा क्या है? ये रेगुलेट करता है, चलाता है सिक्योरिटी इंडस्ट्री. कौन सी? सिर्फ दुबई की. सीरा सिर्फ दुबई में है. ट्रेनिंग कौन सी है? 4 किस्म की ट्रेनिंग है 5 दिन के अंदर. BSG है, BLS है, POD है और बेसिक फायर फाइटिंग है. 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप जाएंगे फाइनल एग्जाम. कहाँ? SCTC एक ट्रेनिंग सेंटर है गवर्नमेंट के अंडर, सीरा के अंडर. उसमें आपका एग्जाम होगा. एग्जाम रिटन होगा कंप्यूटर पे और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा. जब आप ये दोनों टेस्ट पास करेंगे तो फिर अगला प्रोसीजर शुरू होगा. याद रहे कि दुबई के गार्ड बगैर लाइसेंस बगैर ट्रेनिंग पास किए काम पे डिप्लॉय हो सकते हैं अगर उनकी कंपनी टेम्पोरेरी लाइसेंस सीरा से ले ले. अगर कंपनी ने टेम्पोरेरी लाइसेंस ले लिया है तो गार्ड्स को वो डिप्लॉय कर सकते हैं. तो ये फर्क है गाइस दोनों में, PSBD और सीरा में. Now guys, I will come back in English. If you like this video and you get information guys, you can comment guys in positive or negative, no issue. Share the video and try to subscribe because my new videos will reach to you. Thank you very much. Take care.